Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today I'm gonna show you this late 2018 makeup look because this trend is gonna be very popular, like dewy and shiny face makeup with bold color eye makeup look. So let's jump into my video and let's get started. So first I'm gonna start with my Freedom Pro Studio Anti-Shine Lotion because I have already told you guys I have a really dry skin. So I'm gonna apply this all over my face. And after this I am applying this Makeup Revolution primer on my T-zone area because I have some open pores problem on my T-zone area and it minimizes my pores, that's why. To prime my eyes, I am using my LA Pro Girl Concealer in Creamy Beige and I'm applying this all around my eye area because I need a blank canvas for my eye makeup. And then I'm going to top it off with my loose powder. This is from Collection. It's a basic brand from London. For my eye makeup, I am using today W7 on the Rocks Eye Palette. And in this palette, I'm choosing this shade for my cut crease. And I'm gonna cut my crease with the eyebrow brush like this, and you have to be very precise for this. And then I'm choosing this light shade for my second transition color and I'm applying this on my upper crease area. And then I'm choosing this shade for my second transition color and I am applying this shade on my upper crease area with the same technique like circular motion and back and forward motion. And I'm blending these colors really well. After this I am choosing this white kohl pencil from MUA and I am filling my eyelids because I need a blank canvas for my eye makeup so that my all colors will pop out. To give some depth on my eye makeup, I'm choosing this dark shade for my outer V area and I'm applying this shade on my outer V area and I'm blending this color really well because I don't want any harsh line, that's why. So I am taking my time for this and then I am smudging my cut crease area so that सारे colors आपस में merge हो जाए. And then I'm choosing this dark shade to get intensity of this color and I'm applying this shade on my outer V and I'm blending this really well. After this I'm choosing this shimmery shade for my eyelids and I'm applying this shade on my eyelid with the help of flat brush. But I don't know why I prefer my finger to apply this shade on my eyelid. So that's why I'm using my finger to apply shimmery shade on my eyelid to get intensity of this color. And same मैं अपनी second eye पर भी ऐसे ही लगा लूँगी इसको. एंड गाइस आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए जब आप कोई भी शिमरी शेड अपनी आईलिड्स पे लगाते हैं तो उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना चाहिए. मींस कोई भी ऐसा कलर नहीं नज़र आना चाहिए कि ये अलग है ये अलग है. सब सारे कलर्स आपस में बहुत अच्छे से मर्ज होने चाहिए तो ही आपका आई मेकअप बहुत ही अच्छा लगेगा, अदरवाइज बहुत अजीब सा लगेगा. एंड देन आई एम यूजिंग माई दिस गोल्डन आई लाइनर एंड दिस इज़ फ्रॉम कलेक्शन और मैं इसको अपने हाफ कट क्रीज कट करते हुए मैं इसको लगाऊंगी बिकॉज़ मैंने काफ़ी नोट किया है कि ऐसे आई मेकअप लुक बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं लोगों को. सो मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ. और उसके बाद मैंने अपना सेम वो मरून शेड लिया है और मैं इसको फिर मर्ज कर रही हूँ आपस में और ब्लेंड कर रही हूँ जिससे कोई भी हार्श लाइन ना लगे किसी भी चीज़ की.
मैंने ऑफ कैमरा अपने आईलाइनर और अपने आईलैशेस लगा लिए थे. सो आई एम यूजिंग माई दिस कंसीलर. दिस इज़ फ्रॉम LA Pro Girl and this is orange color corrector actually to hide my dark circles under my eyes and to hide my dark spots. And I'm blending this really well. एंड या गाइज मैंने अपने आईब्रोज भी ऑफ कैमरा कर लिए थे. सो अगर आप मेरी आईब्रोज वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं ऊपर एक लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो. एंड आफ्टर दिस आई एम यूजिंग माई मेकअप रेवोल्यूशन कवर एंड डिफाइन कंसीलर इन शेड C9 एंड आई एम यूजिंग दिस in a triangular shape under my eyes and some on my bridge of nose, some on my forehead and some on my cupid bow, some on my chin. And after this I'm gonna blend this really well with my beauty blender. For my foundation, I'm using my Kiko Milano Unlimited Foundation and this is one of my favorite foundation because it gives me a full coverage and a dewy effect. That's why. So I am applying this foundation all over my face and on my neck area. And guys, to get a dewy and shiny effect, I am adding few drops of beauty oil on my stippling brush and I am going to blend my foundation really well. एंड उसके बाद अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैंने अपनी डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प भी ली है. आफ्टर दिस टू सेट माय फाउंडेशन आई एम यूजिंग माय लूज पाउडर. जहाँ पर मेरी मुझे स्वेटिंग प्रॉब्लम है वहाँ पर मैंने लूज पाउडर लगाया और बाद में मैं इसको हटा दूँगी. फॉर माई कॉन्टोरिंग आई एम यूजिंग माई Maybelline Contour Duo Stick एंड मैं इसको अपने हॉलो ऑफ चीक्स पे लगाऊंगी, सम ऑन माई जॉ लाइन्स और कुछ मैंने अपना चिन पर भी लगाया है एंड साइड ऑफ माई नोज एंड देन पैरामीटर ऑफ माई फोरहेड. To lift up my cheeks, I am extending my cheek contour line like this and I am going to blend this with my beauty blender and you have to be very precise for this because आपका जो contour shade है वो सिर्फ उधर ही blend होना चाहिए, वो इधर उधर नहीं होना चाहिए. तो आपको बहुत ध्यान रखना होता है जब आप अपना contour shade को blend कर रहे होते हो. एंड देन उसके बाद मैं अपने जॉ लाइन्स का contour भी blend कर लूँगी और ऐसे करके मैं सारा contour blend कर लूँगी. अपनी नोज़ के कॉन्टूर को ब्लेंड करने के लिए मैं एक ऐसा छोटा सा ब्रश यूज़ करती हूँ बिकॉज ब्यूटी ब्लेंडर का सरफेस थोड़ा सा बड़ा होता है जिसकी वजह से मेरा कॉन्टूर शेड इधर उधर फैल जाता है. अब मैं अपने लूज पाउडर को हटा दिया है मैंने, जो भी मैंने अंडर आइज पे लगाया था. एंड देन आई एम अप्लाइंग माई ब्लश एंड दिस इज़ फ्रॉम ऑल्सो मेकअप गीक और इसको मैंने अपने एप्पल ऑफ चीक्स पे लगाते हुए पीछे की तरफ ब्लेंड किया है. And then I'm using my highlighter and for this I'm using my sleek highlighter palette and I'm applying my highlighter shade on my highest point of my cheeks and some on my chin and center of my nose, bridge of my nose. For my waterline I am using my Rimmel London black kohl pencil and after this मैंने वो same shade use किया है अपने lower lash line के लिए एंड उसको मैंने काफ़ी अच्छे से लगाया है और बहुत अच्छे से ब्लेंड भी कर दिया है. फॉर माई लिप्स आई एम यूजिंग माई मेकअप अकेडमी मैट लिपस्टिक एंड दिस इज काइंड ऑफ न्यूड कलर एंड आई जस्ट लव दिस कलर गाइज. अपने लिप्स को शेप देने के लिए मैं सबसे पहले ऊपर एक एक्स बनाती हूँ एंड देन उसके बाद मैं अपने नीचे वाले लिप्स पे वर्क करती हूँ. अगर आप इस तरीके से अपनी लिपस्टिक लगाते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से और बहुत शेप में लगती है. So guys, this is my final look. I hope you really enjoyed my video and I hope you really love this look. और कोई कह सकता है कि मेरी ड्राई स्किन है बहुत ज़्यादा. Look at my face guys, इतना ज़्यादा dewy and shiny लग रहा है और मेरे जो contour shade है, highlighter है, blush on है, सब आपस में इतने अच्छे से merge हो गया है. कोई भी harsh line नज़र नहीं आ रही है. मैं तो पूरा सेटिस्फाइड हूँ अपने इस लुक से. एंड इफ़ यू ऑल्सो लाइक माई वीडियो, इफ़ यू ऑल्सो लाइक माई दिस लुक दैन प्लीज़ गिव अ छोटा सा thumbs up and if you have any question then you can comment me in my comment section below. If you haven't subscribed my channel guys then please do subscribe my channel guys and share this video with all your friends and family. हम मिलते हैं मेरी next video में. Till then take care, bye bye.